ओके जी, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का वीडियो एक कंप्लीट देखते हैं, जिसमें आप लोगों के पास चैप्टर वन से लेकर लास्ट चैप्टर तक तमाम के एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर की एक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये वाली जो हम लोग प्रीवियस देख चुके होंगे, और उसमें से भी आपने तैयारी करनी है और इसको भी मिलाकर तैयारी करनी है। और अगर इसके बाद भी मटेरियल कुछ बचता है तो मैं अपलोड करूँगा। आप लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए 2-3 वीडियो को मिला जुला कर तैयार करना है। ये नहीं कि आप एक वीडियो पे रहें और उसी से तैयार करें और उससे ज़्यादा चीज़ें ना आएँ, तो आप लोगों के लिए मसला बनेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सबको साथ लेकर चलें। ओके, तो पहले एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन, हॉटमेल। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम by the computer compiler. Which of the following is not a productivity software? Windows. Which type of computer is used for nuclear research? Supercomputers. चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार पेपर्स में आए हैं वो ये हैं। गिव एनी 3 एप्लीकेशन एरियाज ईच ऑफ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। गिव एनी 3 एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। व्हाट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द ग्रिड बॉक्स बिलो। आपके पास ये क्वेश्चन हैं, इनको आंसर करना है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद है व्हाट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल बाय गिविंग एग्जांपल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है डिस्क्राइब द फॉलोइंग मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन टुडेज लाइफ विद एग्जांपल। मोबाइल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर मेमोरी, उसमें पहला एमसीक्यूज 2⁻20। दूसरा, विच द फॉलोइंग कैशे मेमोरी एग्जिस्ट इनसाइड द CPU L1। विच द फॉलोइंग इज टेम्पररी मेमोरी रैम। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू डैश बाइट्स 2⁻10। उसके बाद है विच द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज सीक्वेंशियल एक्सेस टू डेटा। मैग्नेटिक टेप्स एंड कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। उसके बाद है आपके पास व्हाट इज अ चिप मेमोरी, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाट हैपेंस इफ कैशे मेमोरी इज रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर। राइट एनी 3 टाइप्स और डिफरेंसेस बिटवीन DRAM एंड SRAM। व्हाट डेटा टाइप एक्सेस टाइम इन सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस इज मोर देन दैट इन रैंडम एक्सेस डिवाइसेस। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। इसके बाद आपके पास है विच टाइप व्हाट इज मेन मेमोरी, एक्सप्लेन 3 एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी इन डिटेल। ये 19 के पेपर में आया है। उसके बाद है 11 क्लास का चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। विच द फॉलोइंग बस सेंड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल बस। विच द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर टू मेमोरी एंड रजिस्टर टू रजिस्टर। MOV। what are register where are register located inside CPU। उसके बाद आपके पास है what are the results of ALU operations, accumulator register। how many memory locations can be addressed with address bus of 32 bits 2⁻32। काफ़ी बड़ा नंबर आएगा इसके बाद। शॉर्ट क्वेश्चन है what is the function of ALU in the computer। next है name the parts of computer instruction cycle and show them diagrammatically। what is the function of control unit। give any 3 differences between CISC and RISC architectures। write down functions of any 3 special purpose registers। or what is RISC architecture, why is RISC architecture better than CISC। support your answer with the help of example। उसके बाद explain the function of general purpose and special purpose registers in used in computers। explain different types of instruction format with examples। chapter number 5 network communication and protocols। in which type communication mode data can be sent and received in only one direction, simplex। which of the following transmission modes uses a start stop bit for data transmission, asynchronous। which of the following protocol is used for internet, TCP and IP। in which of communication mode data can be sent and received in both directions but not simultaneously, half duplex। number 5, which of the following transmission modes uses a start stop bit for data transmission, asynchronous।
The IP address lies in class B. Email sending mechanism is dash of mode communication, half duplex. Which wireless technology is used in TV remotes and toys? Infrared. Short questions हैं straight. 3 differences between synchronous and asynchronous data transmission. What is guided communication media? Give 2 examples. Give 3 characteristics of metropolitan area network man. Give any 3 basic network components. इसके बाद है give an example of simple half duplex and full duplex communication modes. Give any 3 characteristics of VPN, virtual private network. उसके बाद है list label different parts and name uses of the following cable. Right, तो ये केबल है, इसके आपने different parts और uses को explain करना है. उसके बाद है बच्चों give any 3 limitations of guided communication media, differentiate between client server and P2P network. How is OSI model different from TCP/IP model? Describe the protocol and devices used on different layers of OSI model. उसके बाद है what is OSI model? Give brief description of any 5 layers of OSI model. What is network topology? Explain star topology and bus topologies with suitable diagram. Very important. Chapter 6 finally. Give any 3 advantages of wireless network. उसके बाद है 7. If data is not updated in a file based data management system, what type of problem will it cause? Data inconsistency. What is a thing of interest to organization called about which data is to be held in database? Entity. Which the following database object stores all the information of a database? Table. A record is also called tuple. What is key field called that is used relationship between table values whose value matches a primary key to another key, foreign key. Duplication of data from one file to another is called data redundancy. उसके बाद 10 attributes and 100 tuples, then the degree relation is 10. What is the degree of relationship between entities, author and book? Binary. The student ID field is primary key in student table. The student ID in related exam table is called foreign key. Give 3 disadvantages of file management data system over DBMS. Why it is necessary to normalize our relational database. Differentiate between cardinality and modality. Give any 3 advantages of DBMS over file management system. उसके बाद है a company sells many product to their customers. ये आप लोग पढ़ लिएगा. उसके बाद आपके पास है आप लोगों के पास है write any 3 responsibilities of DBA. A team consists of many players and a player for only one team. Draw an ER diagram. What action should be taken to complete normalization process given below? इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आपने बताना है. उसके बाद एक ये टेबल बना हुआ है. नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें आपने प्राइमरी की वगैरह इंडिकेट करना है. लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगेन एक टेबल दिया हुआ है. आपने इसके लिस्ट करने हैं 1 to many रिलेशनशिप, एंटिटीज एंड ER, कस्टमर लीज. और व्हाट इज द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड लीज? हाउ मेनी बोट्स एन ऑनर मस्ट ओन? How many boats are required for boat lease? उसके बाद आपके पास अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं है, वो आपने करना है. नॉर्मलाइजेशन आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी करना है. इसमें गिव एनी 3 advantages of reports in Access database और गिव एनी 3 advantages of using form in Access database. ये 2 इंपॉर्टेंट है.